Hello everyone, my name is Satyam and I participated in Hackers Meet which was organized by the AST Academy. So my project was on password manager. So if you loved my project as well as the PPT then please vote me. Your one vote will help me to win this competition. Thank you. Sir, my name is Satyam and I'm a class 12 student who is going to pass out this year and a cyber security interesting. So आज के presentation में हम बात करेंगे मेरा टॉपिक है पासवर्ड मैनेजर से रिलेटेड. So without any delay, let's start it. So administrative passwords are literally aplenty in the enterprise. They are mostly insecure and shared lights scatter in the enterprise, leaving little scope for any internal controls. Though the security and operational problem caused by shared administrative passwords are so obvious, no organization can afford to eliminate them together. In this session, I will take you through the importance and the need of password manager. What are the challenges of password manager? Administrative passwords are omnipresent and used to sustain operation through their use in servers, network devices, databases, and other applications where privileged access is required. An institution, as institution, if there is an institution and if they are using administrative privilege accounts are used in shared environments, that means a group of administrators may use a common privilege account to access a particular resources. Therefore, these accounts are accessible to all the member of the team. It is always good to avoid sharing administrative passwords. What are the traditional password management? The password can be maintained in a text file, spreadsheet, or any home ground tools. Using this type of methods and it leads to the unintended sharing of passwords. Developers have full access to databases passwords, Unix administration team having full access to Windows passwords and so on, which is of course a dangerous part. So the second topic, seventh topic is security threats and drawbacks. What are the drawbacks? So it is common for administrators assigning familiar words or short phrases as a passwords for ease of use. Passwords of resources changed and without close cooperation and among this administrators could affect daily operations. If a text file or spreadsheet containing a shared administrative password reaches the hands of the malicious party, data security and the reputation of this institution could be adversely affected. Who has access to what resources? The traditional password management approach has no provision for this. So there comes password manager, which becomes useful while storing a password. So let me give you a brief idea what is password manager. A password manager is a program that houses all the passwords as well as other information in one convenient location with one master password. The benefit to using password managers are a password manager will do the work of creating the complicated passwords you need to help protect your online accounts. You need to remember only the password manager's password, which is called as a master password. That a single password will give you to access to the all others. Many password managers offer the extra layer of protection of two other authentication. As a result, each time you attempt to log in into your password manager, a unique one-time verification code is sent to your mobile phone. To complete the login process, you must enter the verification code in addition to your username and passwords. Why you need a password manager? That's a very big question. No one can remember all the unique and passwords. As the cybersecurity researcher says, you should change the password every 6 months. A password manager can help and will show you how. From dating sites to banking sites, you need different login information nearly everywhere. You can go on the internet. Creating unique and strong passwords are get tricky fast. Some people use simple passwords that are easy to remember, and others memorize one complex passwords and use it everywhere online, which is of course a bad practice. Either option is a recipe for a disaster in the form of identity theft or any account takeover. So don't do it. Instead, use a password manager. Sir, can I show the demo part? Yeah, sure. Thank you, sir.
So this is the program which I've created. So it contains some files like .env file, checking email id.py, database users.py, and GUI.py, which is the, or I should say, the internal part of, or I should say, the skeleton of this project. And this third last is hashing user info.py, sign up data connection.py, and the last one is verification.py. So whatever I've created in a GUI form. So hashing user info.py. So it contains a, first I'm want to start with this file. So it contains a bicrypt module. If you don't know what is bicrypt modules, it's a module which helps in hashing and salting the passwords. So when the passwords get hashed and solved, it is harder to do brute force attack. It is harder and slower to do the brute force attack. Another file is sign up data connection.py. So this is basically I've connected my password manager with the MySQL. As you can see, I've given some password and a host, every all this thing. And here, whenever this database, this file is used to store the data in the database. And this is the verification.py. So it contains the SMT library and random module. So the SMT library which I've used for sharing the for to send the email ID to the user, and I use this random module for for sending the random OTP. Another file is database user.py. So this database helps in basically it's help in basically what I should say that it helps in storing the master password. The last but not the least is checking email id.py. So this file, what it does is it basically check whether the password is in correct, whether the emails are in correct form or not. So I've used a .env file over here. So I've in this file I've tried to store my email ID as well as password to send the email ID to the users. So let's again come to the geo.py. So I've used this Kiwi module and some other I have imported some of the functions from other files, and this is the class which I've used. So the main objective of this project is to store the password in the correct format, and not only this, just storing the password, also about storing the password in encrypted form. So for that, as I told you, I've used bicrypt, and I've also used the two inbuilt function of MySQL. Let me show you where it is. Mm. So this is the function which I've used in MySQL, which is advanced encryption and advanced description, which is used for storing the password of the user. So to store the password of the use master password, I've used this bicrypt module. So I've used some of the classes and functions over here, as you can see. And let's start with the demo part. So if I'm going to start it, it is going to ask for a username and password, and there's also an option of create account and login. So I will show you by creating another account. So let's take an example of creating an example of cat, and I'm going to give an email, my own email ID over here. So I'm giving a password satyam. I'm going to re-enter it over here, and I'm going to submit it over here. So it is going to take some time to send the OTP to my email ID. So as you can see, we got an wait for verification. So we got an verification that wait for the verification number. I will say I will type on OK, and I will comment over here under this section. So I got the email ID, the verification OTP, which is 6825. So let me enter this over here. 6825.
I'm going to create an account. As you can see, the account has been created. So in the back end, I know of course, you are worried about back end. What is happening over here? So let me show you what is happening. So of course, our of course, a user account has been created. As you can see, this cat, I've not stored any password right now till now. So, and I'm going to come over information database, which stores the user's master passwords and email ID. So as you can see here, passwords are stored in encrypted form. So as I told you, I've used bycrypt module, which will be not it will make the brute force harder as well as slower. So as you can see, the passwords and the email. So this is the password which I've used, and this is the email ID. So no one can easily see this. So right now I can want to proceed with by entering my account. Sorry, the password which I've given was satyam, and let's log in over here. So we got an option. That choose the option you want to use. Store the password, update the password, delete the password, or search the password. These are the functions which you can use in this password manager. So for example, if I want to store the password, let's say google.com, you can give any hint or any website name. It's upon you. I'm given a password is satyam. Store the password. So password has been stored successfully. And if I'll come over here, which is in the cat, so as you can see, the password is stored in the encrypted form. And for example, if I want to go back and I want to update my password, and for that I have to enter the website name for password update. So I will type, of course, Google, and the new password will be, for example, they will know you. Update the password. The password has been updated. Okay, and I'm going to go back. And of course, there's also an option of delete password. So if you want to delete any password, you have to just enter the website name or any hint which you have given while creating the password. The password has been deleted successfully. And there's also option of search password where you can search. But right now, I think I've deleted the password. I don't know. Yeah, there is no password right now. I don't think so. Yeah, there is no password because I've already deleted. So there is also an option of website searching the password. So for that you have to enter the password, and your password will be you will get your password. So that was my presentation, and at last I would like to Can you say, please create, can you please go back again and can you please create a password and then again try to search it? yeah, sure, why not? Cat Satyam. I will say login. It has been login. So I'm going to store the password first. So for example, I want to store instagram.com, and I want to store the password like let's say an example of Satyam. Okay, no problem. No, I'm using the password many of time. Let's say devil. No problem with that. Store the password. The password has been stored. For your proof, let me show you. Let me refresh the page. And this is the cat section. Okay, as you can see, the source is instagram.com, and there's the password in encrypted form. And now I'm going to delete search the password. So enter the website name. So of course I will say instagram.com. Password is stable, as you can see over here. Password is stable, as you can see. Your instagram.com password is David. So that's my whole presentation. Any question, any query? Hello. So I want to end this session by saying that passwords are like underwear. Don't let people see it. You should change it every often.
and you shouldn't share it with strangers. Thank you. And if there is any question, you can ask. Great, nice presentation. So this software is developed by you only. Am I right? What's up? This software is developed by you only. Yeah, yeah, sir. It is. It has been developed by me only. Okay, so it's a kind of a web application, or you can make it as a software also. Yeah, I can make as a software. I have some of the ideas regarding this in my future because, as I told you, I'm a class 12 student and I'm going to appear the board this year. So that's a big problem. That's why I'm not trying to make it in advance. So I have some of the ideas regarding this. ओके एंड व्हाट विल बी द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इट मतलब इसका आगे का वर्जन अगर आप लेके चल रहे हैं तो किस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे आप हाँ, तो सर कुछ अगर इसमें क्या? मॉडिफिकेशन करना हो तो या तो आपने एक बार सलाह दिया था कि एक मतलब पेन ड्राइव से, तो मैं सोच रहा हूँ एक पेन ड्राइव जैसा भी मैं इस पे बनाऊँ। थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे कि पेन ड्राइव पे क्या होता है ना, पेन ड्राइव जैसा एक पासवर्ड मैनेजर में बनाऊँ, जिसको जिसमें पहले क्या करेगा, मान लीजिए होता है ना कि कभी कुछ स्टोर करना हो पेन ड्राइव में, उस कंडीशन में आपको पहले तो उसमें एक स्कैनर रहेगा जो पहले चेक करेगा कि मतलब हाँ, जो भी पासवर्ड मतलब क्या इस सिस्टम में कोई मतलब ऐसा है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि कोई ट्रोजन या वायरसेस तो नहीं है। फिर उसके बाद हम उस चीज को स्टोर कर सकते हैं, कहीं रख सकते हैं पेन ड्राइव में। और इसको मैं सोच रहा हूँ, और एक एडवांस वर्जन में इसको वेब में भी डालना चाह रहा हूँ जो फ्री रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो अभी मैं ओके नहीं कर। ग्रेट 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 तो इसके अंदर आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फंक्शन यूज करें डेटा को एनकोड करने के लिए ताकि हैश फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर रहे Yeah. So for that, I've used the bicrypt module. Bicrypt is a module which helps in hashing and salting the passwords. So it will make the brute force harder and slower. And storing the database, storing the password of the user. For that, I've used the advanced encryption and decryption function of MySQL. So this is the advanced encryption function. To avoid the SQL injection, I've used this percentage sign and s, and I've given the password. The whatever it is a function, so whatever the password and the username will be stored, it is going to become over here. So to protect from SQL injection, I use this. okay and how salting will help you to defend from brute force attack So yeah, of course, let me tell you, because as you know, the sorting function is used for adding random things like strings and numbers. So it will be not easy to crack the password. And I told you, it will make it hard and slower for brute forcing. okay and how many tables are there in the database So there are basically two databases, and each database contains two tables. One is source, okay sorry, three tables, which contains the encryption number. So if whenever the any for example uh, for example source has been a password has been added, so it is going to be first, second, so it is going to be in increment form, it is going to be added in the database. So there are basically three database in each uh, table. very good can you please show me the code again Sure, why not? uh, hmm, yeah, this is the so total how many files are there in this software if if I tell you about five Python file, there are one, two, three, four, five files, and one, two, three, four, six files, and one file is .env file, which basically it's helping storing me the password of Gmail ID, and in my email, my own email, which I can't show you right now. And okay another file uh, is file yeah .txt, which helps in checking the OTP. So whatever the OTP which has been sent to a user, so when that OTP is equal to that OTP, then it means that the account has been created. okay Yes. great now Goransh have asked you one question Yeah. there are many password manager already in the market with the same Hmm. concept then how is your tool different Sir, of course, I will say, देखिए क्या है कि
पासवर्ड मैनेजर तो बहुत है सर, बट वो आपका डेटा ले रहा है, डेटा आपसे ले रहा है ना, वेब पे है वो, बहुत सारे लोकल भी है, यस ऐसा मैं बोलता हूँ, क्लाउड पे भी बहुत सारे कनेक्टेड है, मैं भी इसको चाह रहा हूँ कि क्लाउड के साथ कनेक्ट करूँ, लाइक गूगल से या AWS से, तो मेरा थोड़ा सिस्टम का कंजम्पशन ये रहेगा। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इस टाइम पे, आप अपने ये सोर्स कोड फ्री है, आप जाओ डाउनलोड करो अपने से ये करो, मतलब अपने आप कस्टमाइज कर सकते हो, तो ये सब फंक्शन है। ग्रेट। तो आपने ये सोर्स कोड कहीं पे अपलोड करा हुआ है इसका गिटहब वगैरह पे? नो सर, राइट नाउ आई एम नॉट अपलोडेड दिस कोड। रीजन ओके। क्योंकि मैं इसको, तो एज आई टोल्ड यू, कि मैं इसको अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, तो इसको यस, और भी किसी चीज से मैं अपग्रेड करना चाहूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस, कोई और क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर? वेरी गुड। लाइक पासवर्ड मैनेजर आज की नीड है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे मल्टीपल अकाउंट्स यूज करते हैं, सो इट इज नॉट इजियर फॉर अस आल्सो कि ना अपन सारे पासवर्ड को स्टोर कर सके, याद रख सके। तो पासवर्ड मैनेजर एक बहुत अच्छा हेल्प करता है हमें ये चीज करने के लिए। और अगर मान लो किसी दिन लेट सपोज के ना, एक क्वेश्चन और होगा मैं सत्यम से मेरा, कि जी लेट सर। सपोज किसी दिन अगर ये क्योंकि ये मेरी लोकल होस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है ना, हाँ। अभी हमने जी सर। इसको कहीं इंटरनेट पर लिंक नहीं करा, किसी दिन अगर मान लो मेरा सिस्टम क्रैश हो गया, तो हाँ। उसके बाद मेरे पासवर्ड का क्या, कोई बैकअप वगैरह रहता है इसके अंदर या फिर? बैकअप का रही सर, देखिए सबका बैकअप होता है, आप गूगल का भी देखोगे तो गूगल का भी आपका स्टोर रहता है, उसका भी बैकअप होता है, तो फिर इसका भी बैकअप ये होगा। ऐसा बात नहीं है, बैकअप हम क्रिएट नहीं किया कि हाँ, और उसके लिए अलग से मैं, अब जिस टाइप से आप बोल रहे हो उस चीज के लिए हमको अलग सर्वर यूज करना, क्लाउड फंक्शन यूज करना, तो वो तो एक अलग चीज हो गया, इतना वो उसके लिए फिलहाल। आप एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, कि जैसे मान लो जो जहाँ पे डेटा इसका स्टोर हो रहा है, जिस फाइल जिस फोल्डर में डेटा स्टोर हो रहा है, उसको आपने देखा गूगल ड्राइव का लिंक आता है हमारे पास। जी। अगर आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो उसके बाद एक फोल्डर हमें चूज करना पड़ता है, उसमें हम जो भी फाइल डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गूगल क्लाउड के ऊपर सिंक हो जाता है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन का आप यूज करके अपना जो डेटा, जहाँ पे भी आपने इस पर्टिकुलर फाइल का सेव कर रखा है, जैसे सपोज मैंने जैम सर्वर यूज कर रखा है, इसको होस्ट कर दिया मैंने उस पर, ठीक है ना। अब ये फाइल मैंने कहीं ना कहीं तो स्टोर करा होगा, जैम सर्वर के अंदर भी मैंने एसटी डॉक्स में डाला होगा उसको। हाँ तो हाँ। आप वो एसटी डॉक वाला जो फोल्डर है ना, उसको आप डायरेक्टली गूगल क्लाउड से लिंक कर दो, गूगल ड्राइव से लिंक सिंक कर दो। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप उसमें कोई अपडेट होगा ना, ऑटोमेटिकली वो उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देगा। तो अगर इन केस कभी हमारा सिस्टम क्रैश होता है या फॉर्मेट होता है ना, तब भी मेरे पास फाइल्स रखी है, मैं उसको वापस से रीस्टोर करके नए सिस्टम में डाल सकता हूँ। जी सर। ओके सर, ये आइडिया मैं तो इस। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं इसको बैकअप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग अ पासवर्ड मैनेजर, तो उसमें दिक्कत ये रहता है कि यार अगर मेरा सिस्टम गया, लेट सपोज मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि मैं सारा अकाउंट्स के डेटा कहाँ रखता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर। एंड एक बार मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर गया तो मेरा पूरा डेटा चला गया। सो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो हैविंग देयर क्लाउड सेटअप। पर अभी यहाँ पे क्लाउड सेटअप करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर इन द स्टेज ऑफ अभी लर्निंग स्टेज है, तो अपन इतना खर्चा नहीं करेंगे। सो आप ऐसे वन क्लाउड को, आप वन क्लाउड हो गया या फिर अदर कोई ना क्लाउड एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप इसको सिंक कर सकते हैं, जी। गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है ना, वन ड्राइव हो गया, ऐसे एप्लीकेशन के साथ में सिंक करके उस फोल्डर को सिंक कर दो जिसमें डेटा रखा गया है, ताकि ऑटोमेटिकली, और सिंक पे डाल दो उसको, चलता रहेगा वो। ओके सर। हाँ, एक गौरांश का एक और क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया गौरांश, किसी और के कोई क्वेश्चन तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में डालें फटाफट। इफ एनी अदर पर्सन एक्सेसेस लोकल host storage path of the tool, then he can get password in a hash, right? Or we have to enter any code to get in a local host storage path. So गौरांश का क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर दीजिए सत्यम आप। सर मतलब उनका क्या क्वेश्चन है, यही है ना कि मतलब अगर मान लीजिए लोकल होस्ट हैक हो जाता है, मतलब मान लीजिए हम लोग का सिस्टम ही हैक हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको हैश फॉर्म मिल जाएगा। यस। यस। तो देखिए सर, मैंने बोल रहा हूँ ना कि देखिए ये अभी मतलब ये अभी एडवांस फेज में ऐसा तो है नहीं, ये तो बिगनिंग फेज है इसका। मैंने बाइक्रिप मॉड्यूल इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने कुछ एल्गोरिदम देखा, जैसे कि हैशिंग और सॉल्टिंग के फॉर्म में देखा। मेरे बहुत सारा एल्गोरिदम है कि जैसे SHA-1 SHA-2, मतलब नया नया एल्गोरिदम्स निकल रहा है सर, ऐसा बात नहीं है कि, और जैसे कि SHA-1 SHA-2 है, ये सबको इजिली डिक्रिप्ट किया जा सकता है आज के टाइम में, मतलब हो जाता है मोस्टली। तो अब इसके लिए हमको अलग एल्गोरिदम यूज करना होगा, जैसे कि फेसबुक लोग यूज भी, फेसबुक में भी यूज हो रहा है, इंस्टाग्राम में भी तो यूज हो रहा है, बट वो लोग अलग एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो फॉर दैट आई टू क्रिएट अ सेपरेट एल्गोरिदम फॉर दैट। सो वो तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, बट उस चीज के लिए मैं किसी और को हायर कर सकता हूँ कि आप मेरे लिए एक अलग से एल्गोरिदम बनाओ, या कोई नया जो न्यूएस्ट एल्गोरिदम है उस चीज को मैं सेटअप कर सकता हूँ, वो पॉसिबल हो सकता है। ओके, लेट सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा तरफ से भी आ रहा है कि ना, अगर आपका लोकल होस्ट है, आपने इस एप्लीकेशन को डाला हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन मैंने ओपन नहीं करी, एप्लीकेशन का यूजर नेम पासवर्ड मुझे पता नहीं है, जो भी एप्लीकेशन है आपका,
और हाँ मेरे पास वो उसकी सोर्स फाइल होगी। जैसे आपने सुना होगा डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक होता है, हाँ हाँ लेकिन हाँ। पार्ट ट्रैवर्सल अटैक होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टरीज को एक्सेस कर पाते हैं। मतलब उसका वेब एप्लीकेशन तो उसका इंटरफेस नजर आ रहा है मुझे, बट आई एम नॉट एबल टू लॉग इन क्योंकि मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है। गॉट इट। पर हाँ, उसका अगर डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक हो रहा है या फिर पार्ट ट्रैवर्सल अटैक हो रहा है तो मैं उसके अंदर की फाइल्स को निकाल पा रहा हूँ। सही बात है। जी तो जब अंदर की फाइल्स निकाल पा रहा हूँ, अगर आपके एप्लीकेशन की भी अंदर की फाइल्स अगर मैं निकाल पा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे प्लेन टेक्स्ट में डेटा मिलेगा या फिर मुझे हैश फॉर्मेट मिलेगा जो सॉल्टिंग फॉर्म में होगा। हैश फॉर्मेट सर, हैश फॉर्मेट। तो मतलब ये अगर कोई अटैकर इसका लोकल होस्ट पे भी अगर एक्सेस ले लेता है, लेट्स सपोज मेरा सिस्टम का एक्सेस भी ले लिया उसने, एप्लीकेशन का एक्सेस भी ले लिया, हम्म। पर तब भी वो आपका पासवर्ड देख ही नहीं पाया किसी भी कंडीशन में। सर कैन यू रिपीट इफ यू डोंट माइंड, सॉरी। मतलब ये मैं मतलब आपने जो बताया ना उसी का एक आंसर दे रहा हूं मैं कि ना, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने आपकी एप्लीकेशन का एक्सेस ले लिया, हाँ एप्लीकेशन में लॉगिन पेज का एक्सेस नहीं, पर हाँ मैंने आपके डेटाबेस मतलब जो आपका फाइल जहां पे आपने स्टोर कर रखा उस पाथ पे भी चला गया, तब भी मुझे हैश ही मिलेगा और वो उस हैश को डिकोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां पे सॉल्टिंग का यूज करा गया। यस सर। सही बात है। जी सर। तो बहुत अच्छा आपने बाइक्रिप्ट फंक्शन का यूज करा है, उसकी वजह से ये सॉल्टिंग हमने फीचर लेकर आए। अगर सॉल्टिंग नहीं होता, ये नॉर्मल हैश होता, तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी टू क्रैक दिस हैशेस बाय कंपेयरिंग द हैश विद द हैश लिस्ट। रेनबो टेबल अटैक के थ्रू या इस पासवर्ड को तोड़ा जा सकता था, पर यहाँ पे आपने सॉल्टिंग का यूज करा है जिसकी वजह से इसको पॉसिबल नहीं है क्रैक कर पाना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनी मोर क्वेश्चन गाइस? किसी और के पास कोई क्वेश्चन है इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? आर्यन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? No, sir. Great. Anybody is having any questions? सत्यम, कितना टाइम लगा होगा आपको ये डेवलप करने में? सर देखिए, क्योंकि पाइथन मेरा ऑलमोस्ट एडवांस फेज में चल रहा है, मतलब हाँ कि अब हमको डीएसए सीखना है कॉलेज में जाके। मुझे हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। बट वेरी गुड। हैकिंग में इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि हैकिंग में क्या है ना कि देखिए डेवलपर से ही गलती होता है, यस, डेवलपर से ही गलती होता है तभी हैकिंग होता है। तो मैं जो भी क्रिएट किया हूँ उसको मैं कभी भी हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से सोचता हूँ। तो इस इट टुक मी अराउंड ऑलमोस्ट आई शुड से 27 days ऑलमोस्ट, आई शुड से। यस, वेरी गुड। तो 27 दिनों के अंदर आपने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करा है। और जी अगर सर। आपको कोई इस सॉफ्टवेयर के लिए फंडिंग प्रोवाइड करे, तो हाँ, क्या आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं प्रोवाइड, मतलब अगर कोई किया तो, बट उसके लिए सर अभी मैं रिसेंटली अभी टाइम नहीं है सर, मतलब मैं हाँ, आइडिया। मतलब कॉलेज के बाद जब आप कॉलेज में जैसे आपके एग्जाम हो जाएंगे, देन यू विल गो इन अ कॉलेज, तो जुलाई अगस्त में अगर आपको कोई फंड करे पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन को और अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए, और इसको कहीं ना कहीं अपन कोलैबोरेट कर सके किसी और ऐसी एप्लीकेशन के साथ में जो ऑलरेडी इस टाइप की चीजें यूज कर रही है, जी तो सर क्या हो। आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे? हाँ व्हाई नॉट, मैं करना चाहूंगा, कोलैबोरेट तो करना ही चाहिए क्योंकि उससे आइडिया शेयर होता है। वेरी गुड।